one of the most interesting cities of India, Kolkata, which is the cultural capital of India, has the oldest zoo, oldest port, oldest metro, oldest polo club, largest cricket ground, is the second home of Mother Teresa, and is also known as City of Joy. Kolkata is known for its food, culture, art, and Leo and I were there for 2 days and had the bestest time. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 2 दिन कोलकाता में क्या क्या कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं डे 1 से, which is early morning at Fleury's, which is in Park Street. A place that was established in 1927 and is famous for its fine dining. बहुत ही fancy vibe आ रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ही lavish cafe है. But let me first tell you if it is worth it or not, the food over here. यहाँ का English breakfast बहुत ही अच्छा है और उससे अच्छा है खर्चा, क्योंकि हमने कुछ 2000 रुपए खर्च किए थे, जो I feel थोड़ा प्राइसी है, बट वन ऑफ द चेक पॉइंट्स दैट यू शुड डू व्हेन इन कोलकाता. वहां से हम गए सेंट पॉल कैथीड्रल. दिस कैथीड्रल इज लाइक अ हिडन जेम, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर किया था इट रिमाइंडेड मी ऑफ मिलान्स कैथीड्रल. लुक एट दिस गॉथिक आर्किटेक्चर पीपल. दिस वाज बिल्ट in 1847 and it is considered one of the largest cathedrals in Kolkata. Actually मैं इटली गई हूँ, मिलान में, और वहाँ पे एक चर्च है जो बहुत ही सिमिलर दिखता है and it reminded me of that. सेंट पॉल कैथीड्रल के साइड में मैदान है which is very famous for its early morning sunrises. वहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं और वहीं पे आपको विक्टोरिया मेमोरियल भी दिखेगा. सो कहा जाता है कि ताजमहल को जिस मार्बल से बनाया है उसी टाइप ऑफ मार्बल को यूज किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए. This was established in 1901 and this is also one of the most famous buildings in the country in the memory of Queen Victoria. इसको विजिट करने के लिए आपको एक छोटी सी एंट्री फीस देनी होती है और आप between 5:30 AM to 6:30 PM में कभी भी जा सकते हो. बहुत सारी फैमिलीज आते हैं. It's a perfect place for family and local people. और आप ये विजिट कर सकते हो, म्यूजियम देख सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा दिन कहाँ चला गया. एंड ऑफ कोर्स जब पूरा दिन निकल जाएगा ये सब एक्सप्लोर करने में भूख तो लगेगी. सो इट्स टाइम फॉर लंच, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी न्यू मार्केट, ऑल्सो नोन एज हॉग्स मार्केट, which is the oldest market of Kolkata. Yeah, but this is not a fruit. This is aerated. This is rasna. Yeah, it is rasna. How the? हमें लकीली एक रेस्टोरेंट मिला यहाँ पे जो में बहुत ही क्यूट है, पिंक कलर का है और इसका नाम है स्कूप. यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं. अगर if you have to come and you want to see something different, this is the place to come where everything is pink. Nice. Good, good. इसी रेस्टोरेंट के बाहर आपको बहुत ही सारी स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. बट अगर आपको बाहर से लंच नहीं करना, यू कैन गो बैक टू योर होटल, टेक अ चिल. हम आईटीसी में रह रहे थे जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, तो हम वापस चले गए थे वहां पे लंच करने के लिए. बट इफ यू वांट मोर होटल ऑप्शंस देन यू कैन चेक आउट वीगो. आई एम यूजिंग वीगो ऐप and its services are available in various languages and currencies. This is especially handy when it comes to booking hotels, as it compares hundreds of hotel websites to bring you the cheapest fare for your trip. You can find hotel prices from websites like Airbnb, Booking.com, Agoda, Make My Trip. In fact, ये IRCTC train bookings भी दिखाता है. Don't forget to update the app क्योंकि बहुत सारे latest versions आए हैं. The download link is in my description. Coming to the best sunset spot of Kolkata, which is Prinsep Ghat. Ideal जगह है बहुत ही खूबसूरत sunset देखने का, जहाँ पे बहुत ही अच्छी breeze चल रही होती है और आप एक boat ride कर सकते हो. This is like a paradise for photographers. What are we having? We are having puchkas, the very famous puchkas. How is it? So what's the difference between a puchkas and golgappas? I don't know. I think inside they have potatoes, and golgappas have ragda, which is like chana. कुछ फर्क नहीं है दीदी, बहुत अच्छा है. और इसके साइड में ही आपको बहुत सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे टू ट्राई लोकल डेलिकेसीज ऑफ कोलकाता. बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आप हुगली रिवर के बोट राइड पे बहुत ही अच्छा सनसेट देख रहे होते हो. आफ्टर दैट वी वेंट टू आर्सलन, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा डिनर किया था. इट्स अ पैराडाइज फॉर पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन. जैसे लियो ने बिरयानी खाई थी. सो पीपल, वी आर इन अर्सलन. यहाँ का सबसे हाईएस्ट रिकमेंडेड रेस्टोरेंट था और ये 2002 में एस्टेब्लिश्ड है. और इनफैक्ट जो यहाँ का खाना है वो मुगल से इंस्पायर्ड है, मुगल cuisine से इंस्पायर्ड है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. बट मी बीइंग अ वेजिटेरियन, मुझे तब भी खाना बहुत अच्छा लगा था. तो अगर आप वेजिटेरियन हो आप यहाँ पे जा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कमिंग टू डे 2, प्लीज 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 गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज यू कांट मिस सनराइजेस इन कोलकाता, स्पेशली इन होबरा ब्रिज.
one of the best architectures of Kolkata, and it is said that Hobra Bridge doesn't have a single nut or bolt. इसी के साइड में मलिक फ्लावर मार्केट है, which is Asia's biggest flower market and is 161 years old. Our next stop was Kumartuli, which is the Potter's Colony. So people, अब हम आ चुके हैं कुमारटुली और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जगह बहुत ही ज़्यादा आर्ट्सी है. लोग यहाँ पे बहुत ही सारे स्कल्पचर्स बनाते हैं और पीछे देख रहे होगे देवी के बहुत सारे स्कल्पचर्स बन रहे हैं. ये जगह दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स मिलते हैं और यहाँ पे एक रिक्शा पुलिंग कार्ट भी है जहाँ पे आप बैठ के enjoy कर सकते हो. एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ कोलकाता. फ्रॉम देयर गो टू द बुक लवर स्पॉट विच इज कॉलेज स्ट्रीट. सो कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई बुक नहीं मिल रही, यू कैंट फाइंड दैट बुक एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड one of the oldest second-hand book place. So if you want to come here and purchase books, this is the best place to do so. और इसी के साइड में इंडियन कॉफी हाउस है, which is the oldest coffee house. और यहाँ का खाना बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकते हो अपनी कॉफी के साथ. कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको बाहर नहीं भेजेगा. You just order your coffee and sit and study or talk and chit chat. It's up to you. इसके बाद of course आपको डिनर के लिए जाना पड़ेगा और हम गए थे बालूगंज which was amazing. So this is the restaurant which has been recommended by so many people, especially by the locals over here. और यहाँ पे हम बंगाली खाना खाने आए हैं. मैं वेजिटेरियन हूँ तो of course I'll try vegetarian Bengali food. Interiors बहुत ही ज़्यादा impressive है. I'm already impressed, but खाना टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ if it is worth it or not. What do you have to say? The fish is sweetwater fish. At the same time, there's a spice. It's very spicy. But it's too good. Yeah, it's been cooked in banana leaf. And we're eating it with dal rice. Nothing can beat this combination. Cheers. Cheers. Have to cheer with me. So yes, this was my 2 days of experience in Kolkata. Although Kolkata में बहुत कुछ है करने को, but वो सारी जगह थोड़ी सी दूर है, टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए. But अगर आपके पास 2 दिन है, you can go to these nearby places. But if you have more days, extra days, then you can also add on those places which are far away. But I hope this video was helpful. If you are going for 2 days, this is what you must do. Baki, I'll see you in the next video. Until then, like, share, comment, subscribe for the algorithm. Bye bye, take care. Oh, you just say hi. 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 Thank you for coming. Thank you for coming. Hi. Hi. Yay.